Hare Krishna. So welcome back, devotees, to the new verse. I was absent for these 2 to 3 days because I have got some sickness. अभी क्या कहते हैं वायरल फीवर का सीजन भी चल रहा है because the weather is transitioning from winter to summer. So uh, I was taking some rest, and I am right now back in my service to Srimad Bhagavatam, to all of you devotees and Shri Shri Radha Krishna. So without wasting any time, we will be jumping onto the verse. This verse, it goes like this. क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनम् अन्येभ्यो वा काकिनिकामात्रम् अपहरन् यत्किञ्चिद् वा विद्वेषम् इति वित्त साधयात्. So the translation, it is very small but purport is little big. So without any waste of time, taking mercy of Srila Prabhupada by his because this translation purport given by Srila Prabhupada by his in grace Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. So forgive this pause because अभी थोड़ा सा मन भी घुमा हुआ है after coming back to this topic of Srimad Bhagavatam. So here Sri Sukdev Goswami says, as far as transaction with money are concerned, if one person cheats another by farthing or less, they become enemies. So we see that there many times it happens that कभी दो व्यक्ति मिलाकर कोई बिजनेस चला रहे हो, नहीं तो हाँ वो एग्जाम्पल में आता है बहुत सारा. और एनीथिंग कुछ भी पैसे पैसे का बीच में कुछ भी लेन देन हुआ, उसमें कोई भी किसी ने कुछ भी छोटा सा भी गड़बड़ क्यों नहीं किया, तो दे बोथ बिकम एनिमीज, बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमीज. सो हियर Prabhupada explains in his purport. Prabhupada की जय. Prabhupada says दिस इज कॉल्ड संसार दावानल. हम गाते हैं सुबह मंगला आरती में, संसार दावानल दृढ़लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वम. Samsara Davanal. Even in ordinary transaction between two people, there is invariably cheating because the conditioned soul defective in 4 ways. 4 ways. कौन से 4 ways? Please comment in the comment section. He is illusion. He commits mistakes. His knowledge is imperfect, and he has a propensity to cheat. Yes. 4 defects बोल दिए, अभी comment करने की ज़रूरत नहीं. He is illusion because a person is always illusion. Abhi 99.999999% people, you take any one person and you will see that he is illusion by this material Maya. Maya is illusion क्या है कि illusion means what? A person who has forgot or who has taken a dread निश्चय कि उसको भोग करना इस भौतिक दुनिया में. His real identity was to serve Krishna. His lifetimes after lifetimes, or you can say serving Krishna. जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास. So it's his propensity to serve Krishna, but his illusion that no, I am the enjoyer, so I must enjoy. He commits mistakes. To err is called a human. So this line is very much famous. So a human is he is destined to commit mistakes. Like हम एग्जाम्पल दे सकते हैं दैट इन केमिस्ट्री देर आर मैनी एटॉमिक मॉडल थियरी अगर आपने पढ़ा हो. सो उसमें पहले थॉमसन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड बोले कि अरे इसका थियरी गलत है, मेरा थियरी सही है. फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर बोहर आए, बोहर ने बोला इसका थियरी गलत है, मेरा थियरी सही है. सो बोहर का मॉडल आया, फिर आइंस्टाइन आए. So this knowledge, these mistakes a human being commits again and again. So his knowledge is imperfect. A person's knowledge is imperfect. तो यही theory that imperfect knowledge, imperfect theories of human beings, and he has a propensity to cheat. So this last
लास्ट जो गुण बोल सकते हैं, अवगुण एक व्यक्ति का, एक ह्यूमन बीइंग का, और एक बोल सकते हैं कि पर्सन हु हैज़ टेकन बॉर्न इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, उसका प्रोपेंसिटी टू चीट, इस अवगुण के बारे में इस पूरे परपट में और ट्रांसलेशन में चर्चा हो रही है. Unless one is liberated from material conditioning, these four defects must be there. Yes, one should be liberated, or else there is no, liberation from these four defects. Consequently, every man has a cheating propensity. इसके ऊपर ही I have created this video, which is employed in business or money transaction. Although two friends may be living peacefully together, due to their propensity to cheat, they become enemies. When there is a transaction between them, transaction is necessary. Any transaction or any वो जो दोस्त है ना, where there is no material, there is no money transaction, they live the best friend life. और जिस दो व्यक्ति के बीच में मनी का ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं कि कंपनी या गवर्नमेंट का, खुद का पैसा, खुद का जो जान है मनी, वो दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है दो व्यक्ति के बीच में, then they become a greatest enemy. So yes, a philosopher accuses an economist of being a cheater, and an economist may accuse a philosopher of being a cheater when he comes in contact with money. In any case, this is the condition of material life. One may profess a high philosophy, but when one is in need of money, he becomes a cheater. In this material world, so-called scientists, philosophers, and economists are nothing but cheaters in one way or another. The scientists are cheaters because they present so many bogus things in the name of science. जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, देखो अभी पढ़ के अभी मैंने पढ़ के थोड़ा सा ख़त्म किया है. राइट नाउ आई एम प्रीचिंग श्रीमद् भागवतम. सो one may profess a high philosophy, but when one is needing money, he becomes a cheater. भले ही वो कितना भी बड़ा फिलोसॉफी क्यों ना बना दे, बट अगर वो मनी, पैसे की इच्छा में और पैसे चाहिए उसको, ही बिकम्स अ चीटर. पैसे के नीड में कोई भी व्यक्ति उसको कितना भी नीचे गिरा सकता है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. अभी इस परिस्थिति में आ गए हम. This material so-called scientists, philosophers and economists are nothing but cheaters in one way or another. कुछ ना कुछ वे है, मतलब ऐसा नहीं that scientists would cheat in the same way as philosophers do, or philosophers may cheat the same way as the economists do, but they have their own ways to cheat each other or ourselves or themselves also. The scientists are cheaters because they present so many bogus things in the name of science that Darwin's theory, अरे हम पहले बंदर थे, नहीं बंदर से स्टार्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक से देयर वाज अ क्रिएशन ऑफ लिविंग सेल. उसके बाद वो पहले पानी में रहा, फिर पानी से उसका डबल सेल हुआ, ट्रिपल सेल हुआ, ऐसे सेल बढ़ बढ़ के इट बिकम अ फिश और समथिंग. फिर वो फिश बाहर आया, वो चलने लगा, फिर उससे this bogus theory we are right now, science thinks that we have started from nothing to everything, but shastras give the exact opposite. We were the highest beings, or you can say the first being was in this material world. Material की बात चलिए, because Krishna or Vishnu, he is transcendental to this material world. So but starting of this material world was by Brahma. He was the highest living being. फिर उसके बाद मनु आए, नारद मुनि, चतुष कुमार, फिर मनु से स्टार्ट हुआ the progeny, and right now we are the वंशज of Manu, we can say. So this is the thing. but साइंटिस्ट ने उसका उल्टा ही थियरी बना के रखा है. They propose going to the moon, but actually they end up cheating the entire public of large sums of money for their experiments. Yes, Srila Prabhupada, and because Srila Prabhupada doesn't believe that a person going on to moon, भले ही वो कुछ ऐसा कुछ जगह पे जाके आए जो मून जैसा दिखता हो, बट वो मून है ही नहीं. चंद्र ग्रह इधर, इट इज अ whole planet where people live, where
people go for sense gratification after doing tapasya for many years. So it is a swarga lok में आता है चंद्र ग्रह, but वन ऑफ द स्वर्ग उच्च ऊपर के स्वर्ग लोक पे आता है चंद्र ग्रह. बट वी थिंक दैट मून में पहुंच गए, मार्स पे, मंगल ग्रह में पहुंच जाएंगे एक दिन, और वहाँ पे हम हमारा प्रोजेनी करेंगे, नहीं तो हम हमारा वहाँ पे रहने का कुछ करेंगे. वो इलॉन मस्क ही इज बर्निंग हीज इनफाइनाइट मनी, इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट मनी इज ओनली विद द लॉर्ड, बट ही इज burning billions of dollars, billions of money to live in Mangal Graha, but this is that it will never be possible. They cannot do anything useful unless one can find a person transcendental to the four basic defects. One should not accept advice and become a victim of the material condition. The best process is to take the advice and instructions of Sri Krishna or his bona fide representative. In this way, one can be happy in this life and in the next. So here Sri Prabhupada gives very important advice to us, that one should not accept advice of a person who has these four defects. He may be anyone, बट उसका एडवाइस लेना ही नहीं चाहिए. उसका ही एडवाइस लो हु इज़ आउट ऑफ दिस फोर डिफेक्ट्स, विच इज़ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा और हिज प्योर ड्यूटीज. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज श्रीमद् भागवतम वीडियो. Thank you for listening to this lecture. If there is any question, you can comment in the comment section. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. आप सभी भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा.